आज अच्छा अवसर है कि हम सब यहाँ पर साथ साथ हैं। बड़ों को देखकर छोटों को प्रेरणा होती है। इस अवसर पर हम सब के लिए प्रेरणा स्वरूप डॉक्टर जय कुमार सर, जो हमारे इस कॉलेज के अधिष्ठाता हैं और इस प्रकार की समस्त गतिविधियों का मार्गदर्शन भी करते हैं, हमारे भी गाइड हैं, उनसे भी आग्रह है कि आज इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर जी। I always keep on thinking, I think I just heard a few versions, the students, their aspirations, once they are in the university or any education institution, what do they have in their mind? What for they are in, and when they go out, what they plan to do. More often it is seen that the three questions, they are not asked by students from themselves, from within themselves in fact. But they only keep one thing in mind: what are they going to do after they go out of this university or the institution in fact. Like, how are they going to be placed, what are they going to get, whether this will be commensurate with their expectations or not, whether they're going to have comfortable life or not. These kind of things often, they keep on evolving within a student, and he or she keeps on building his or her thoughts around those expectations or visions, if you may say so. Many of you know already the traditions of this university, the pass outs, the alumni, how are they revered, how are they remembered, what they have done for themselves and for the society and for the country, etc., etc. I often keep on asking myself and thinking also, that why growingly, progressively, we have to remind ourselves, and also to our dear students in fact, of the necessities and the requirements of all these things. That education is just not a means to earn a well-placed occupation which places you well, gives you comfort. It is more than that. Which means that why progressively we are turning into materialistic life, wherein the emotions are detached from one another, from the institution, from the society, and from the nation. Why progressively we keep on worrying about ourselves only, our own welfare, rather than the welfare of the all? Is the type of education which is giving this kind of notions to the student is relevant, is adequate, is appropriate or not? So we are asking question all the time. More often, if I say so, that we have the responsibility to build this university, the society, and the nation. And more often, many of us, or I'll say each one of us, we ask ourselves, what I can do alone? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? What can I do? It's a nation of 1.2 billion. मेरे अकेले करने से क्या होने वाला है? What I am going to do? How is it going to matter? This is the thing we ask. But then all of us feel one thing that is common, that we all probably want goodness for the nation. हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे. हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी एक ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, सेंसिटिव सोसाइटी बने. हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय और आगे बढ़े.
All of us want. But when it's come to the question of doing something at an individual level, then we again fall back. We want to be in the queue, but we don't want to be at the forefront. हम आगे नहीं आना चाहते ये सोच के कि मेरे अकेले करने से क्या होता है. That's the problem actually. कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है ये हम सोचते नहीं हैं, और ये जो सोचने की जो हिम्मत है वो हम लोग नहीं कर पाते. This is where the difference lies actually. On the other hand, if each one of us starts doing his or her own job honestly first, I'll keep the word honest first. Honestly. Honest का मतलब simply ये नहीं है in monetary terms. मनी का लेन देन ही सिर्फ honesty को नहीं दर्शाता. Honesty in every sphere, every walk of life. That is honesty. Honesty towards your institution. Honesty towards your profession. Honesty towards your life. Towards yourself even. आपके अपने लिए भी honesty वो भी बड़ी important है, वो भी होनी चाहिए. ये सब चीज़ें बेहद important हैं, बहुत important हैं. I was reading somewhere the other day an instance, in fact, which was quoted vehemently actually by someone, I think, that they were giving an instance of what an individual can do. Well, they gave an example of one village, Gahlor in Bihar. Maybe you have read it somewhere. That wherein it was mentioned that there was one gentleman named Dashrath Manjhi. Okay, he's a villager, ordinary villager, and he lives in a village that's called Gahlor in Bihar. In his village, he had that a big, hillock, big mountain, rocky mountain was there, which was a hindrance, in fact, in transportation, in making the road, in bringing the outside resources in the village, and therefore the progress was being hindered actually. So he had some goats. He decided to इसको बेच देगा. बेच के एक कुछ implements, कुछ औजार, फावड़ा, chisel, those things he'll purchase, and he will start hitting at that hillock, कि धीरे-धीरे तोड़ेगा. And he did that. उसने काम शुरू कर दिया. और as expected, जो उसके villagers थे, जो दोस्त थे, मित्र थे, they just laughed at him. And they said, "Oh, being foolish. How can you do all this?" And they said, "Herculean task. Can you do it all alone?" He said, "No. But then, why don't you join me?" They didn't do that because they thought it was impossible. वो नहीं कर सकता और ना ही हम कर सकते. So they didn't join him. But he was working slowly and slowly all along. Now you think, when first day he would have hit that hillock, और शाम को घर आया होगा, उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा? What he must be thinking? What has he attained? What has he achieved? उसने अपने हाथ के छाले देखे होंगे, और लेकिन क्योंकि उसने 20 साल तक ये वाला काम अकेले किया, he would have been energized. उन छालों को देख के वो और encourage हुआ होगा कि I'll do even more what I did today. Towards the weekend, जब 1 इंच भर वो आगे बढ़ा होगा अपने efforts में, उसने क्या सोचा होगा? I don't know. But what I know is that when he worked for almost 2 decades in the same mission, he could do it. उसने उसको हटा दिया रास्ते से. Means रास्ते से हटाने मतलब ये है कि उसने जगह बना दी, रास्ता बना दिया, and through which he was able to create a passage, a road for the village. Now, the issue is very glaring here, that individual, that fellow, that was Maji, he could do that. Whereas all were looking from a distance to see that when he fails, when he falls flat on the ground. It didn't happen. It didn't happen. So the only issue is this, that we don't recognize, our capacity, our capability.
हम लोग अपने आप को असेस करने में फेल हो जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को असेस करने में फेल हो जाते हैं। हम सिंपली ये सोच लेते हैं कि ठीक है, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा इन टर्म्स ऑफ गेनिंग सम एजुकेशन, सम डिग्री, और उसके बाद इमीडिएटली मुझे क्या मिलने वाला है उससे, हमारा विजन यहीं आगे रुक जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, you are all successful, I can see in front of me. But I am only asking that if we add one figment of responsibility towards this attainment or now, then the whole thing changes. Everything changes then. अगर हम ये इसके साथ साथ कर लें कि मुझे अपनी ग्रोथ के साथ साथ इस सोसाइटी को भी बिल्ड करना है, इस नेशन को भी बिल्ड करना है, then the entire scenario changes. Entire approach changes, entire action changes, entire outlook changes. अन्ना हजारे के बारे में आपने खूब सुना होगा आप लोगों ने, हो सकता है कुछ में से आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया हो। कोई सोच सकता है आज के ज़माने में कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी ने एक ऐसा बीड़ा उठाया विदाउट वायलेंस, through non-violence, he could congregate the hearts and minds of millions of people, for one cause, and that is to get freedom for the country. उसके बाद जब इतनी जीवन व्यस्त हो गया है, सब इतने व्यस्त हैं, सब आदमी को इतनी होड़ लगी है अपने 10 कामों के लिए, कोई सोच सकता है कि आज के दिन के अंदर कोई एक आदमी आवाज़ दे, उसके पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हो जाएं? But then he did it. You demonstrated it that it is still possible. अन्ना हजारे तो एक ही है, but then it became hundreds and thousands and millions of अन्ना हजारे, when he raised the slogan for that matter, for one cause, एक honest society हो, free from corruption. That is the strength of when you feel that आप अकेले या आपके इनिशिएटिव लेने से कितना कुछ बदल सकता है, आप अकेले ही कितना कुछ बदल सकते हैं। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक बात मैं और सोचता हूँ कि आप सब लोग यंग हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशन में आ चुके होंगे, कुछ लोग, आई डोंट नो ऑल ऑफ यू एक्चुअली, लेकिन you would be reading newspapers and news and everything these days. That is, what is happening in the nation? What is happening in terms of our economy, in terms of politics? What is happening? आप देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं कि डॉलर ये हो गया, रुपया ये हो गया, 64 रुपया वगैरह वगैरह, you all know that. You read it, लेकिन हम मोर ऑफन हम उसकी जड़ में नहीं जाते, ये नहीं सोचते कि क्यों हो रहा है, Why is this happening? क्या वजह है इसकी। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात आती है, सिर्फ हम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनको एब्यूज़ करके चुप करके बैठ जाते हैं, बस यही बात खत्म हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और कितने सालों तक या कितने समय तक ऐसा चलता रहेगा। क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? कैन वी डू एनीथिंग? हम अपने आप को क्यों अलग कर लेते हैं इस पूरे सिस्टम से? वाई वी से दैट वी आर इनसेंसिटिव, या हम इम्यूनिटी की चादर ओढ़ के बैठ जाते हैं कि हमसे कुछ मतलब नहीं है, जो होता नहीं। वाई डू यू थिंक दैट कि आज के ज़माने में, जैसे फॉरगिव मी अगर मेरी बात पसंद ना आए आप किसी को, तो कि पॉलिटिशियन अगर कोई है, कोई नेता कोई है, कोई लीडर कोई है, वी डू रिस्पेक्ट टू जैसे एवरीवन वन एंड ऑल एक्चुअली, हम क्यों ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो नेता है इसका मतलब करप्ट है? क्यों? व्हाई इज दैट? क्या हमने जनरलाइज कर लिया? व्हेन वी से नेता इट मींस करप्ट? अगर हम ये कहें कि ऑनेस्ट लोग
पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो क्यों, वाई, क्यों नहीं आते? People are often asking a variety of questions, कि इंडिया वैल्यूलेस नेशन है, इससे वैल्यूलेस कंट्री, किसी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है? यूनियन कार्बाइड का आपने सुना होगा, कितने साल हो गए, कितने लोग मर गए, गैस लीक हुआ, कितने लोग मर गए, उसमें इंसान की वैल्यू कितनी है, जो है सीन है। अभी तक जो जनरेशन वहाँ जो आ रही हैं, वो जो क्रिपल्ड हैं, यू नो ऑल दिस थिंग। वो इसलिए कि जो बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी होती जा रही हैं, मीन्स, और छोटी होती जा रही हैं, मीन्स कि आपके हाथ में आईपैड है, आईपॉड है, व्हाटएवर यू से, यू हैव वर्ड इन योर हैंड, ठीक है? बड़े बड़े कंप्यूटर्स, जब हम पन्नगर में शुरू में आए थे तो फिलिप्स का एक कंप्यूटर था, तो इतने बड़े हॉल में रखा होता था, इतने बड़े हॉल के अंदर, और उसमें डेटा पंचिंग होती थी और सब कुछ होता था और एवरीथिंग। नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन नॉट थिंक अबाउट दैट कि कभी ऐसा भी होता होगा। हाथ में आईपैड है, आईपॉड है, वर्ड आपके हाथ में है, और आप अपने में ही खोए हैं। आप मीन ऑल ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग यू, बट ऑल ऑफ अस, हम अपने में ही खोए हैं, मेटलिस्टिक हो गए, दूसरे के बारे में ज़्यादा ध्यान देने का समय नहीं रहता, और धीरे धीरे अलूफ होते गए, सोसाइटी से अलूफ होते गए। बट देन व्हेन इट कम्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स, तब हम फट से एक्यूज भी कर देते हैं कि इस सोसाइटी को हमें देने के लिए कुछ नहीं है। वी डोंट आस्क आवरसेल्फ कि हमने क्या दिया इसको, हमने इसके लिए क्या किया ताकि हमें कुछ दे सके। वी डोंट डू दैट। तो इसलिए इट इज़ द टाइम, इन माई ओपिनियन, ये अब बड़ा एक राइफ, दिस इज द टाइम इज राइफ, एज द से, टाइम इज राइफ दैट वी शुड थिंक अबाउट सच थिंग्स, कि एजुकेशन का अर्थ क्या है इन रियल सेंस। इज इट अर्निंग ए गुड respectable GPA and then a job, or it's more than that? अगर आपने अपने व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो आपकी एजुकेटेड होना या ना होना बराबर है। If every one of us influences another person by our deeds, by our behavior, by our action, by our vision, by our approach, by our honesty, by our sincerity, by our respect, तब तो बात समझ में आती है। यदि हम ये सब कुछ यदि हम नहीं कर सकते, we should believe in ourselves that कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक किताब पढ़ के अच्छा GPA लेके एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली, और हम सिर्फ अपने ही भले के लिए जो किया है वो कर रहे हैं। हमने इस यूनिवर्सिटी का डेट पे नहीं किया, इस सोसाइटी को बिल्ड करने में कुछ नहीं किया, इस नेशन को आगे बढ़ाने में कुछ नहीं किया। चुपचाप हमने सुन के बैठ गए कि हमारा नेशन इज वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड, चुपचाप सुन के बैठ जाएंगे। जहाँ 1/3 पॉपुलेशन BPL है, जहाँ इतनी लिटरेसी है, जहाँ इकनॉमी की हालत ये है, जहाँ हमारे पड़ोसी आए दिन हमारे लिए दिक्कत पैदा करते रहते हैं, चुपचाप सुनकर हम लोग बैठ जाते हैं। इसलिए देयर इज ऑलवेज नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, और इंट्रोस्पेक्ट टू द लेवल टू रिवील टू वन सेल्फ कि हमारा दायित्व क्या था, क्या होना चाहिए, और हमने क्या किया। जीबी पंथ का एक ट्रेडिशन है, बहुत ही एक वैल्यूएबल ट्रेडिशन है यहाँ का एक, कि जो यहाँ के alumni हैं, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनका जुड़ाव अपने इंस्टीट्यूशन से हमेशा बना रहता है। जैसे वैसे ये बताया अभी कि जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनकी दोस्ती और मित्रता
इतनी स्ट्रांग, इतनी प्रगाढ़ बनती है इस विश्वविद्यालय के स्टे के दौरान जो है कि वो ईयर्स तक बनी रहती है, बढ़ती रहती है। ये ट्रेडिशन जो है वैल्यू से बनते हैं, वैल्यू सिस्टम से बनते हैं, ये सब ट्रेडिशन जो है। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं आपकी तरह इस जीबी पंच से जुड़ा हुआ हूँ और इसके लिए जो भी पॉसिबल है मेरे लिए, इस संस्थान को आगे ले जाने के लिए आप लोगों के सहयोग से we all trying hard that this institution grows as ever, और इसका नाम हमेशा आगे बढ़ता रहे। और इसके साथ साथ आप भी you also feel proud इस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट थे, आप कभी एसोसिएट थे, आपको भी इसका प्राइड हमेशा मिलता रहे। Thank you very much for your patient listening, and I wish you all the very best in your future endeavors, future life. Thank you.